Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 2nd and 3rd of November. The session will be quite beneficial for you all students, so stay tuned with us till the end. In this video students, we are talking about UIDAI. They have launched Aadhaar Vision 2032 framework. Then we will be talking about Vyas Bharat and Vyas Sutra. These are the two initiatives that has been recently launched. We will be discussing about them. These are the digital applications. Then we will be talking about India. We are hosting Milan 2026. We will be discussing it. Then India funded the multi-ethnic trilingual school that was inaugurated in Sri Lanka. So we are even funding a school in Sri Lanka. We will be discussing it. All these things and many more will be revised and discussed in this video students. So stay tuned with us till the end. If you are new here students, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and do hit the like button. I want to see maximum likes on this video from all the students who are watching my videos on regular basis. Do hit the like button. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs students. We are talking about India Maritime Week that was held from 27 to 31st of October. So this is the first question that can be asked, that India Maritime Week is observed from which date to which date? It is from 27 to 31st of October. What is the location where this was observed? It was in Mumbai, Maharashtra, right? Which is the ministry, correct, that organized or this observed this India Maritime Week. So it was organized by Indian Ports Association, and it was hosted by whom? It was hosted by the Ministry of Port, Shipping and Waterways. I repeat, if asked that it was organized by whom, it is Indian Ports Association, and Ministry of Port, Shipping and Waterways will be your answer when we are talking who hosted it. Where was this hosted? This was hosted at the NESCO Exhibition Center that is in Mumbai, Maharashtra, right? From 27 to 31st of October at NESCO Exhibition Center in Mumbai, Maharashtra. This event was inaugurated by Amit Shah, our Home Minister, and this is the theme students that I want you all to remember, that is quite important for you all. Theme being Uniting Oceans, One Maritime Vision. This is the theme here, right? As the name suggests, India Maritime Week, the focus will be on growing the maritime sector of India, right? This is observed that we can flourish this sector, because we see that because of the maritime economy, large portion of our economy works, right? Many people's day-to-day income is dependent on the maritime economy, right? And with this we also saw various other events such as your 4th edition of the GIMS. First of all, let's talk about 2nd edition of your Sagar Manthan, right? This is the 2nd edition of Sagar Manthan, the Great Oceans Dialogue, that was organized by Ministry of Port, Shipping and Waterways, that was also held from 27 to 31st of October, and this was held under the theme Harnessing the Blue Economy for a Sustainable Future, right? Blue economy, where we talk about fishing, right? It was a part of it. Take a note of this. Then focus here will be on blue economy innovation, ocean governance, climate resilience, your maritime security and many more. Then other thing that you need to remember is about Global Maritime India Summit, right? This is the 4th edition of the GIMS that was held during this India Maritime Week at the NESCO Exhibition Center in Mumbai, Maharashtra. And same, the aim here is to bring together various stakeholders that include your government officials, investors, various port officials, investors, shipping, right, inland coastal waterways and many more. Then comes your Green Maritime Day. This Green Maritime Day, it is observed on 28th of October. Directly remember this. Correct students? So these are some things that you need to remember. Apart from this is your UNESCAP Asia Pacific Regional Dialogue on Sustainable Maritime Connectivity. This was held from 28th to 29th of October. And why this was held, this dialogue? It is basically to bring together various stakeholders and enhance the resilient and sustainable maritime connectivity, specifically in the Asia Pacific region, right? So these are some initiatives that were launched here. These you need to remember, and the main theme is India Maritime Week, observed from 27 to 31st of October. Moving on.
Next is students, Prime Minister Narendra Modi was on a visit to Gujarat from 30 to 31st of October, right? And this was to attend Rashtriya Ekta Divas celebration. I repeat, it was to observe and participate in Rashtriya Ekta Divas celebration. Take a note of this. And he paid floral tribute to Sardar Vallabhbhai Patel. Floral means flowers. Correct. Then during this celebration, Prime Minister Narendra Modi administered Ekta Divas pledge and witnessed the Ekta Divas parade in Ekta Nagar. Now this question can be asked students, that Ekta Nagar parade or this Ekta Divas parade was held where? It was held in Ekta Nagar. This Ekta Divas, right? This is observed basically, or Rashtriya Ekta Divas. It is to mark the 150th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, who is also known as the Iron Man of India. Correct students. Where was this observed? At Ekta Nagar, that is in Gujarat. So this question can also be asked, that Rashtriya Ekta Divas celebration is observed why? So it is to mark the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. Was the 150th birth anniversary. During this, multiple initiatives were launched, right? For example, here Rashtriya Ekta Divas celebration we just saw. Then here only e-buses were flagged off. 25 new e-buses worth 30 crore rupees were flagged off. Right here, multiple infrastructure projects were also launched. Apart from this, Arambh 7.0 interaction, right? On here only, Prime Minister Narendra Modi interacted with the officer trainees of the 100th foundation course during the conclusion of the Arambh 7.0 with the theme reimagining governance. Now students, this is also another question that I want you all to remember. Question can be asked, what is the theme for Arambh 7.0 interaction, right? That was conducted or who Prime Minister Narendra Modi that interacted with the officer trainees. So theme being here reimagining governance. Here, if we talk about Gujarat, who is the Chief Minister of Gujarat? Bhupendra Bhai Patel. And who is the Governor of Gujarat? Acharya Devvrat. Next is UIDAI has launched Aadhaar Vision 2032 framework to secure digital identity ecosystem. I repeat, UIDAI, that is your Unique Identification Authority of India. They have launched Aadhaar Vision 2032, that is a comprehensive strategic and technological roadmap that aims to future-proof India's Aadhaar digital identity system for the next decade in October 25. This initiative, it aims to update the strategy and technology of Aadhaar card to be in line with the changing laws and new technological development. See, Aadhaar card, it is a 12-digit number, right, which is unique for every individuals. For this Aadhaar Vision 2032, UIDAI, they have set up a high-level expert committee that will be chaired by Neelkant Mishra, right? Neelkant Mishra, who is the chairperson of UIDAI. This committee that has been set up, this high-level committee, it will be comprising of 11 members. So another question students, that a high level committee that has been set up here by UIDAI, who will be chairing it? It will be chaired by Neelkant Mishra ji, and this committee will be having how many members? It will be having a total of 11 members. Correct? And here various new technologies will be incorporated in making sure that Aadhaar card is safe, right? Here we will be seeing AI will be coming into play. Blockchain will be a quite interesting technology play that we will be seeing with the Aadhaar card, right? Because it will be secure. Moving on students, next is Union Minister of State George Kurian has launched Marine Fisheries Census 2025 and a digital apps, that is Vyas Bharat and Vyas Sutra. First of all students, you need to understand what is a census. Census is when a survey is done for a large population and various data is collected. With this data, proper analysis is done and meaningful output is taken out of this survey, right? This helps us to make sure that the people who make decisions, right, they have the authority, they have the data, and this helps in better decision making in various sectors. So recently George Kurian, right, he has recently launched the 5th Marine Fisheries Census household enumeration along with the 2 digital mobile applications that are your Vyas Bharat, that is your Village Jetty Appraisal Navigator Bharat, and Vyas Sutra. They were launched at the ICAR arm, that is Central Marine Fisheries Research Institute in Kochi, Kerala.
Correct? Take a note of this. First of all, if we talk about this household enumeration marathon census, right? This is a shift from paper-based surveys to fully digital. Another interesting thing. Why we are seeing this? Because now everything is being shifted from paper-based to digital, right? Paperless, correct? And we are seeing that this will help us to even save data for a long term, and we can utilize the data for decision making also, because with various softwares, with various ways we can analyze that data, correct? So here this census was held. What is the theme on which this census was held? Theme being smart census, smart fisheries. This is the theme under which it was held. And here the core household data collection will be carried out over 45 days from 3rd of November to 18th of December across India's coastal states and union territories. So various data will be collected here, that how many people are indulged in fishing, right? What are their sources of income, what type of fish they are fishing, right? Where they are selling those fishes, right? How that economy is being impacted, what is the revenue generated there, right? All the data will be collected in this census. This is the first thing. Then second thing, remember 2 digital applications were launched. Actually 3 digital applications were launched, that is Vyas and Navy, Vyas NAV, Vyas Bharat and Vyas Sutra. If we talk about Vyas NAV, it is for the validation of the fishing villages and the harbors. If we talk about Vyas Bharat, this is for the households and infrastructure enumeration. And Vyas Sutra, it is for real-time supervision and monitoring of the households and the enumerators. Correct? Take a note of these. These applications, they have been developed by whom? They have been developed by ICARM, CMFRI. We just saw here. Correct? Moving on. Next is India to host Milan 2026 IFR and IONS Conclave of the Chiefs in Visakhapatnam, Andhra Pradesh in Feb 2026. Take a note of this, students. This will be the first time India will host all these 3 flagship naval events simultaneously. Right? IFR here stands for International Fleet Review, then exercise Milan in 2026, and IONS Conclave of Chiefs, that is Indian Ocean Naval Symposium's Conclave of Chiefs from 15th to 25th of Feb in 2026. Take a note of this. What is the location where they will be hosted? They will be hosted in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Then if we talk about this exercise Milan, this is a biennial multilateral naval exercise conducted under the Eastern Naval Command of the Indian Navy. If we talk about IFR, International Fleet Review, it will be India's 3rd IFR and the first to showcase the indigenous Indian naval ship Vikrant. Which INS will be showcased at IFR? It is INS Vikrant. This is important, students, very important question. So take a note of it. Moving on. Next is international affairs. India funded the multi-ethnic trilingual school that was inaugurated in Sri Lanka. What does this mean? That our country is funding a school. We are providing the funding for the setting up of it, for the infrastructure. And it is a multi-ethnic trilingual. Trilingual means 3 languages. It will be focusing on 3 languages. Which are those languages? That is Sinhala, then Tamil and English. Right? So these are the 3 languages, hence trilingual. Where it was inaugurated? In Sri Lanka, and India is funding it, that is close to 320 million Sri Lankan rupees. This will be amount that will be funded by India to set up this school that is in Sri Lanka, and it will be funded by India. Next is banking and finance, students. Axis Days, right? Exidase Technologies and France Silas SA. These 2 organizations have signed a memorandum of understanding to develop CUAS drone system. What is the CUAS? This is your counter unmanned aerial system drones system. See, counter means they will be targeting, they will be destroying and nullifying the other unmanned aerial vehicles, be it missiles, be it drones, be it aircrafts or any other technologies, right? So they will nullify them. This is a counter unmanned aerial system drones, right? So this will be targeting all these drones and nullifying it. Who will be signed under this? Who will be developed? This will be developed using Exidase Technologies Limited and Silas SA. And what is this system? This system is basically a laser based system. So using laser, say for example, this is the system and these are the drones that are flying. So with the laser, they will be targeting these drones, these aircrafts, right? And they will be
taking them down. Even missiles can be taken down using this system. So this is a counter unmanned aerial system, drone system for the Indian Armed Forces that will be developed, and it will be a laser based. Next is City Union Bank. They have secured $50 million from IFC, that is an arm of World Bank only, and it is to promote green MSME financing. What is green MSME financing? Basically to help the MSMEs adopt green and sustainable green initiatives, right? Sustainable energy efficient technologies, right? So that they do not create pollution, right? The energy that they are using, that should be green energy, correct? It will be focusing on solar energy and wind energy, right? So City Union Bank, CUB, they have secured how much amount? They have secured $50 million from whom? From IFC, and it is to promote green energy or energy efficient and sustainable practices for the MSMEs. Directly remember this, and this will support India's target of becoming net zero carbon, or becoming carbon neutral or net zero emissions by 2070. Moving on, students, next is economy and business. L&T partners with GAASI. What is this? GAASI. This is your General Atomics Aeronautical System Incorporation, right? This is a USA based global leader in unmanned aerial aircraft systems, and what they will be manufacturing? MALE drones in India. What is MALE? Medium altitude, long endurance, remotely piloted aircraft system. What is this remotely piloted? That means these drones, they will be remotely piloted from a certain location, and they can travel a distance to carry out the mission that they have, right? So again, you see, these are for the MALE manufacturing or MALE drones manufacturing, and here we are talking about anti-drone system, counter drone system for the Indian Armed Forces, right? So we can say with this, students, that the future, they will be utilizing these unmanned aerial vehicles, they will be using these drones, right, in the warfare, and this is the future of warfare, right? The technology is shifting, right? We are seeing that the defense equipments, they are changing. Even with the help of AI, these drones, they will become more efficient in the future, right? Take a note of it. And here in the earlier phase, 87 of such drones will be manufactured. Moving on, next is Zen Technologies. They have secured anti-drone system orders worth 289 crore rupees from the Ministry of Defense. See, another drone order we are seeing. This is an anti-drone system. Earlier we saw that was a laser-based anti-drone system, and again we are seeing here this is a anti-drone system, and this will be done using, or which is the organization they have secured the order from Ministry of Defense. It is Zen Technologies. The order is worth 289 crore rupees, and here you will be seeing Gen Technology. They will be using artificial intelligence. They will be incorporating it with the radar systems, various sensors, right, so that they can carry out this anti-drone efficiently. Moving on to awards and recognition, students. Ministry of Health and Family Welfare, they have achieved three Guinness World Record titles under Women's Health Campaign, SNSPA. What is this SNSPA? First of all, it is your Swasth Nari Shashakt Parivar Abhiyan. So three Guinness World Records has been achieved by the Ministry of Health and Family Welfare, right? And this campaign under which they have achieved it, this campaign is basically a health and empowerment campaign for the women and children in India. If we talk about this Guinness World Record, they showcases India's unified efforts through various government initiatives, various digital health innovations, and community participation towards healthy women, empowered families, and Viksit Bharat. If we look at these world record, first is for the maximum registration. This is the first Guinness World Record. The campaign has set the record for the highest number of people to register for a healthcare platform in a single month. That is over 3,21,49,711 registration. Second world record is for maximum screening for the breast cancer, and almost 9,94,349 people had been signed up for the breast cancer screening online in a single week. Third world record is maximum screening for vital signs, that is 1,25,406 people signed up for vital screening in a single week at a state level. So these are the three world records that were achieved by Ministry of Health and Family Welfare. Moving on, next is Lucknow, that is in UP, has designated as the UNESCO Creative City of Gastronomy under UCCN. First of all, what is UCCN? UCCN is your UNESCO Creative Cities Network, right? So in this UNESCO's Creative City Network,
Lucknow of UP, right, that is also the city of Nawabs, has been designated as the creative city of gastronomy. This question can directly be asked that which is the UNESCO's city of gastronomy. It is Lucknow, UP. And with this recognition, Lucknow became the second Indian city after Hyderabad, Telangana to receive this title under UCCN. If we talk about UCCN, it was established in 2004 to promote the cooperation among cities that recognize creativity as a strategic factor for sustainable urban development. Take a note of this, students. This is quite important. And also the city, that is Lucknow, UP, which became the second city, right, in India to be designated as the UNESCO's creative city of gastronomy. Right, students? Also, now next question can be asked, where was the announcement made? This announcement was made during the 43rd session of the UNESCO's General Conference that was held in Samarkand in Uzbekistan, placing Lucknow among 70 global gastronomic hubs. Right? Take a note of it. Moving on. Next, students. Next is Dabang Delhi KC clinched Pro Kabaddi League Season 12 title by defeating Puneri Paltan in the finals. So, which is the Kabaddi team that has won the Pro Kabaddi League 11 session? It is your Dabang Delhi KC. They have won this Pro Kabaddi League Season 12. They defeated whom? They defeated Puneri Paltans in the final. Where was the final held? Location at the Tyagraj Stadium in New Delhi. Very important, students. Take a note of this. Correct. And this is their second title. That means second time they have won this title. First time they won this in the Season 8. And now this is the Season 12 that they have won. Moving on. Next is Indian tennis player Rohan Machanda Bopanna. As you can see him in the picture, right, has announced retirement from the professional cricket. Right, take a note of this. He was honored with Padma Shri in 2024. This question can be asked. Then Arjuna Award in 2019. Then Eklavya Award in 2005. He is related to which sport? He is related to tennis. He has a career of over 20 years. He won Australian Open in 2024, French Open in 2017. He also took part in Olympic Games, that is into London Olympic of 2012, Rio Olympic Games of 2016, Paris Olympic Games of 2024. Also, he was the gold medalist of the Asian Games in 2018. Next, students, is important days. World Vegan Day observed on 1st of November. What is vegan? Vegan is basically a diet in which you do not include any product that you get from animals. Not just meat, not just chicken, it can be anything. Even the dietary products, even the milk, paneer, right, they are not included in this diet. Right, it is considered a healthy way of living, well-being living, right, to focus only on the products that are given or generated or coming through the plants. Right, hence World Vegan Day that is observed on 1st of November. Right, there is a when do we observe this? On 1st of November, and it is to raise awareness about the benefits of the vegan diet. First time observed in 1994. Next, students, next is International Day to End Impunity for the Crimes Against Journalists, observed on 2nd of November. Right, this is to raise awareness about the threats that are posed by the impunity for the attacks against journalists. This is observed on 2nd of November. And there is a theme, students, that I want you all to remember here. Chat GBV, raising awareness on AI facilitated gender based violence against women journalists. This event here where this was observed was in UNESCO, Paris, France. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part that will be quite beneficial for you all. Before moving, students, I want you to all like the button if you find the session interesting, and if you think that the content that we provide on daily basis, right, the videos that we are uploading on our channel on daily basis is up to the mark, and you are finding that these videos are quite beneficial for you all. Even, students, we upload these videos regularly, so do watch these videos on regular basis, right? Even if you don't have your exams, I'll suggest you all to watch these videos because they will help you in gaining knowledge, right? It will help you in your journal awareness, right? It will help you, right, in knowing what is happening all around the world, which is quite important. You generally read newspaper. I suggest that watching our video is quite more beneficial than reading a newspaper. So now let's move to the revision part. In September, which institute collaborated with the Guidance Tamil Nadu to launch Innovation Tamil Nadu, India's first state-level startup and innovation
dashboard. So which institute collaborated with the Guidance Tamil Nadu here? Name that institute. It is IIT Madras, right? Important, and it is the first state level startup and innovation dashboard, that is innovation dashboard. The platform here will be acting as one stop source for information on Tamil Nadu startup ecosystem. Next, in September, which companies collaborated with Tata Electronics Private Limited to deliver India's first indigenously designed and fully owned 4-channel X-band beamformer IC model, that is FD3R4411, right? So which company collaborated with Tata Electronics Systems Limited? It is Fermion IC Design Private Limited, that is India's leading fabless radio frequency integrated circuit design company. Next, in September, Union Minister Amit Shah, that is our Home Minister, inaugurated India's largest and modern sports complex named Veer Savarkar Sports Complex at 825 crore rupees. Where was this inaugurated? In Ahmedabad, Gujarat, the aim of which is to establish the city as India's sports capital, right? And this facility, it will be India's largest and most modern sports complex that will be equipped with world-class infrastructure that aims to establish Ahmedabad as India's sports capital. Next, as per the September 25 notification by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship regarding the increase in monthly apprenticeship stipends, what is the maximum monthly stipend for apprentices under the NAPS and NATS? It is 12,300 rupees, right? The new range has been fixed from 6,800 rupees to 12,300 rupees, from previous range that was 5,000 rupees to 9,000 rupees. So we have seen an increase here in the stipend. Next, in September, Tamil Nadu's Chief Minister M.K. Stalin has launched Anbu Karangal Hands of Love scheme under the Thyamunwar scheme in Chennai, providing a monthly financial aid of 2,000 rupees to how much? To whom? It will be for the orphaned children. Next, in September, DPIIT has commemorated the 3rd anniversary of National Logistics Policy. What is the aim of this policy? To enhance the logistic and make sure that the logistic in India becomes at ease and also it becomes more economic. Then by question is, by which year does India aims to be among the top 25 countries in the Logistics Performance Index under the NLP? What is the targeted here? So the target year is 2030, and you must have seen that India is also launching multiple projects that will be helping our country India to reach this target. Next, mention the name of the exercise conducted by Indian Army's 1st Armored Division to validate water obstacle crossing capabilities under the operational conditions. So mention the name of that exercise. The exercise here is Jal Shakti, right? Jal Shakti. This is Indian Army's 1st Armored Division that conducted this exercise Jal Shakti, and it is a combat readiness drill to validate the water obstacles that are crossing the capabilities under the operational conditions. Next, in September, the 2nd National Conference of the Heads of Anti-Narcotics Task of States and Union Territories was inaugurated by our Home Minister Amit Shah in where? Right? What is the location where was this inaugurated? So this was inaugurated in New Delhi. Next, on September, the Ministry of New and Renewable Energy notified the national policy on what? It has it has notified the national policy on the geothermal energy that will promote clean energy transition and support India's net zero target of 2070. Right? By 2070, our country India, we want to become a net zero carbon country. That means we do not want to release more carbon that we are capturing. Right? So it was focused on geothermal energy. What is geothermal energy? Geothermal energy is when we are using Earth's heat in order to boil the water, right, which will further generate steam, and that steam will be utilized for running or revolving the turbines. Next is, from which of the following airports of UP did Union Minister Kinjarapu Ram Mohan Naidu launch the initiative that is Yatri Seva Divas in September, that is focusing on the passenger centric services? So from which of the following airports in UP? It was from Hindun Airport. Take a note of this. This was from Hindun Airport. And Airport Authority of India observed Yatri Seva Divas across all the airports in India. Right? Take a note of this, students. Next, mention the state which became the first state in India to issue ID cards to the self-help group
women's. So it is Tamil Nadu that became the first state in India that has issued the ID cards to the self-help groups. Important students, take a note of this. And with this initiative, right, take a note of this, it will be very beneficial for the women self-help groups here, right, because they will be now be eligible to provide it with the various schemes that are launched by the central government as well as the state government. Next is find out the date on which the 9th edition of Swachhta Hi Seva campaign will be culminating across India. So find out the date. Which is the date? It is 2nd of September, 2nd of October 2025, and it is on the occasion of the birth anniversary of Mahatma Gandhi ji. The campaign will aim to mobilize millions of citizens in mass drive for public cleanliness across the country. Theme here will be Swachhotsav. Theme here is Swachhotsav, right? This is the theme here. Next is identify the Indian defense company that signed a 66 crore rupees contract in September with Indian Navy for the supply of indigenously built underwater remotely operated vehicles. So identify the defense company that we are talking about. It is Croatia Technologies, right? It is Odisha's deep tech startup company Croatia Technologies, and they have signed this contract worth 66 crore rupees, and it is approximately almost $7.5 million. With this was signed with whom? It was signed with Indian Navy, and it is for the supply of underwater remotely operated vehicles. Take a note of this, students, important, and this will be done under Make in India initiative, and we know what is the criteria for Make in India, that at least 50% of the indigenous content should be indigenous. Next is name the district that topped the national innovation ranking under Inspire Award Manak, right? That is Millions Mind Augmented National Aspiration and Knowledge, right? It is by submitting 7,403 innovative student ideas. So name that district that we are talking about. It is Muzaffarpur, Bihar, right? It is followed by Bangalore Urban of Bengaluru, Karnataka with 7,306 ideas. So it is Muzaffarpur, Bihar that has secured the top position here by providing almost 7,403 innovative student ideas, correct, under this Inspire Award Manak. Next is where did India host the second edition of BIMSTEC Young Leaders Summit 2025 from 9 to 11th of September, right? So where did India host it? It was hosted in Guwahati, Assam. Take a note of this. Where was this hosted? It was hosted in Guwahati, Assam. Next, mention the multinational technology company that recently partnered with Bharat Jain in September 25 to advance Indic language AI models in India. We have so many large languages, right? So in order to cater them all, this was done. So mention that multinational technology company that did this. It is IBM, International Business Machines. IBM did this. Next is identify the country that partnered with Maharashtra government in September to modernize the Mumbai's historic season dock into a modern, efficient and sustainable harbor. So identify that country that we are talking about. It is Finland. Right option is Finland. Next is in September, Indian Railways officially renamed Ahmednagar railway station of Pune division in Maharashtra to what? It was officially renamed to Ahilya Nagar, right? And it has been renamed after 18th century Maratha queen, students. So take a note of this, right? And this was renamed after her for her contribution to public welfare and governance. This railway station was renamed after her, that is Ahilya Nagar. Next, what is the toll-free number to register GST-related consumer complaints on National Consumer Helpline launched by the Department of Consumer Affairs in September? So, what is the helpline that we are talking about? It is 1915. Next is our homework, students. First is, tell me Coal India Limited, they partnered with which IIT, right, for sustainable energy, for clean energy research and innovation in India. Second question, which state has recently joined PM Shri scheme? Also explain what is this PM Shri scheme. Third question, tell me recently, name India, our country, we have unveiled the first indigenous antibiotic. Name that antibiotic. Fourth question, what is the rank of India globally in terms of forest area? This report was released by which organization? Tell me that also. And fifth question, recently
Tell me if I ask you, when do we observe Vigilance Awareness Week? And the theme for this Vigilance Awareness Week, and why do we observe Vigilance Awareness Week? So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 2 एंड 3 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, ये एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए जुड़े हैं स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी आपकी लर्निंग के लिए। राइट, स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले यूआईडीआई ने लॉन्च किया आधार विजन 2030 को, इसको डिस्कस करेंगे। देन अभी बात करेंगे जॉर्ज क्यूरिन जी के द्वारा एक सेंसस लॉन्च किया गया, एंड व्यास भारत एंड व्यास सूत्रा एंड व्यास एनएवी, ये 3 डिजिटल एप्लीकेशंस लॉन्च की गई हैं, इसको डिस्कस करेंगे। देन अभी इंडिया होस्ट करेगा मिलेन 2026 को, आईएफआर को एंड आयंस कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स को। कहां पर? विशाखापट्टनम में। इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे इसको भी। फिर हम बात करेंगे, इंडिया ने फंड किया मल्टी एथनिक ट्राइलिंगुअल स्कूल को श्रीलंका में। ट्राइलिंगुअल मतलब 3 लैंग्वेजेस में ये स्कूल यहाँ पे सिखाई जाएंगी, इसको डिस्कस करेंगे। एंड ये स्कूल इंडिया के द्वारा फंड किया गया है। तो ये सारी चीज़ एंड मैनी मोर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एंड तक बने रहिएगा। मैं स्टूडेंट्स आप सभी से चाहता हूँ, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमें, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, एंड फिर आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करना। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे इंडिया मैरीटाइम वीक। राइट, यह भी 27 से 31 अक्टूबर तक हमने ऑब्जर्व किया इंडिया मैरीटाइम वीक। कहां पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। इंडिया मैरीटाइम वीक डेट पूछी जाएगी, कब से कब तक? 27 से 31 अक्टूबर तक। ये किसके द्वारा होस्ट किया गया? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा होस्ट किया गया। अगर पूछा जाए किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, तो इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। लोकेशन कहां पे हुआ था इसका इवेंट? नेस्को एग्जीबिशन सेंटर, जो कि मुंबई, महाराष्ट्र में है, वहां पर हमने इस इवेंट को ऑब्जर्व किया। राइट, तो ये आप यहां पे देख सकते हैं। फिर इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? अमित शाह जी, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। फिर इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, इस थीम को नोट डाउन करेंगे। थीम है यूनाइटिंग ओशंस, वन मैरीटाइम विजन। ये थीम रहेगी, जो मैं चाहता हूं आप सभी इसको याद रखें। ठीक है, फिर इसी के अलावा हम देखेंगे कि यहीं पर हम बात करेंगे कि कैसे हम इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं, मैरीटाइम इकोनॉमी को फ्लरिश कर सकते हैं। राइट, फिर इसी के अंडर देखेंगे सेकेंड एडिशन ऑफ सागर मंथन। ये ग्रेट ओशंस डायलॉग है, ये भी सेम 27 से 31 अक्टूबर तक हुआ। सेकेंड एडिशन रहेगा इसका, एंड ये इवेंट की भी एक थीम थी, जो है हार्नेसिंग द ब्लू इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इसके बाद आ जाता है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। राइट, ये आपका 4th एडिशन रहेगा इस समिट का। ये भी इसी इंडिया मैरीटाइम वीक के दौरान था, नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में। एंड इसका एम क्या है कि वेरियस मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स जो हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो गए, चाहे वो पोर्ट से रिलेटेड पर्सन्स हो गए, कंपनीज हो गई, शिपिंग से रिलेटेड हो गई, राइट, इनलैंड वाटरवेज, कोस्टल वाटरवेज, इन सबको यहाँ पे एक साथ लाके, एंड कैसे हम मैरीटाइम इकोनॉमी में, मैरीटाइम सेक्टर में रिफॉर्म्स ला सकते हैं, इसको ग्रो कर सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा की जाए। देन ग्रीन मैरीटाइम डे 28 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व किया गया था, इसको मार्क करके चलेंगे। एंड देन आ जाता है UNESCAP एशिया पैसिफिक रीजनल डायलॉग ऑन सस्टेनेबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी, कि कैसे हम एशिया पैसिफिक रीजन में जो कनेक्टिविटी है, मैरीटाइम इकोनॉमी है, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जो कनेक्टिविटी है वो बेटर हो सके, जो लॉजिस्टिक्स है वो और अच्छी हो सके, ट्रेड एशिया पैसिफिक नेशंस के बीच में फ्लरिश कर सके। ये ऑब्जर्व किया गया 28 से 29 अक्टूबर तक। सेम कहां पर? नेस्को कन्वेंशन सेंटर में इन मुंबई, महाराष्ट्र। तो ये 3-4 चीजें याद रखेंगे। एंड इंडिया मैरीटाइम वीक ऑब्जर्व किया गया, इसकी थीम क्या गई, किसके द्वारा होस्ट किया गया, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, कब हुआ, ये सारी चीजें नोट करके चलिएगा।
चलिए फिर इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी विजिट पे थे गुजरात में 30 से 31 अक्टूबर तक। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों विजिट पे थे? यहाँ पे इन्होंने अटेंड किया राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेशन। ये जो राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेशन है ना, ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही हम आर्यन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, राइट। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये ऑब्जर्व किया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, और इस बार 150th राष्ट्रीय एकता दिवस हमने ऑब्जर्व करा। मार्क करेंगे इसको, राइट। यहीं पे एकता दिवस परेड भी हुई थी एकता नगर में। ये इंपॉर्टेंट है। एकता नगर है कहाँ पर? गुजरात में। तो ये परेड हुई। फिर यहाँ पे 1140 करोड़ रुपए के कई सारे प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इनके द्वारा इनॉग्रेट किए गए। यहीं पे 25 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बसेस को यहाँ पे लॉन्च किया गया, जो कि ऑलमोस्ट 40 करोड़ रुपए की है, 30 करोड़ रुपए की ये बसेस रहेंगी। वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, करेक्ट। तो हम बात किया राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेशन हमने देखा। फिर एक आ जाता है RM 7.0 इंटरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है एंड इसकी थीम जरूर याद रखनी है, रीइमेजिनिंग गवर्नेंस। ये क्या था? RM 7.0 इंटरेक्शन ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ऑफिसर ट्रेनीज हैं ऑफ द 100th फाउंडेशन डे कोर्स, इनके जो ट्रेनीज हैं उनके साथ यहाँ पे वार्तालाप की गई, उनके साथ इंटरेक्शन किया गया। तो ये है RM 7.0 इंटरेक्शन। इसकी थीम भी जरूर मार्क किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि RM 7.0 इंटरेक्शन कहाँ हुआ, राइट। तो गुजरात में कब इनके द्वारा ये जो RM 7.0 इंटरेक्शन है इसकी थीम क्या रहेगी? वो है रीइमेजिनिंग गवर्नेंस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर आधार विजन 2032 UIDAI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया कि कैसे हम डिजिटल आइडेंटिटी इकोसिस्टम को और सिक्योर कर सकते हैं, उसको बेटर कर सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं आज के टाइम पे AI पिक्चर में आ गया है, जो साइबर थ्रेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब क्वांटम टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विलो, जो कि गूगल की वन ऑफ द फास्टेस्ट क्वांटम चिप है। तो इससे हमारी जो सिक्योरिटी लेयर है ना वो कम हो सकती है। तो उसको और बेटर करने के लिए, साइबर अटैक्स को और कम करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, ये विजन लाया गया आधार विजन 2032, जहां पर हम आधार कार्ड को और सिक्योर करने की बात करेंगे। आधार कार्ड हम सब जानते हैं ये क्या है कि एक 12 डिजिट का हर इंडिविजुअल का एक नंबर होता है जो कि उनकी आइडेंटिटी से रिलेटेड होता है, उनको बताता है कि ये पर्सन है, ये इनकी आइडेंटिटी है, राइट। तो इसको और सिक्योर करने के लिए ये लॉन्च किया गया UIDAI के द्वारा। यहां पे हम देखेंगे कि नई टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम आधार कार्ड को और कैसे सिक्योर कर सकते हैं, इसीलिए ये यहां पे लॉन्च किया गया। अब देखो, अब जब ये लॉन्च किया गया है तो डेफिनेटली इनके ऊपर कुछ कमेटी काम करेगी। तो ये एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। ये हाई लेवल कमेटी 11 लोगों की कमेटी रहेगी, जिसको चेयर किया जाएगा किनके द्वारा? ये क्वेश्चन आएगा तो चेयर किया जाएगा नीलकंठ मिश्रा जी के द्वारा। नीलकंठ मिश्रा जी के द्वारा। ये कौन है? ये चेयरमैन है UIDAI के, राइट। एंड ये 11 मेंबर की कमेटी रहेगी, ये मार्क करके चलेंगे, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जॉर्ज क्यूरियन। इन्होंने लॉन्च किया मरीन फिशरीज सेंसस 2025 को, पहली चीज। दूसरी चीज व्यास भारत, व्यास सूत्रा एंड व्यास NAV, ये 3 डिजिटल एप्लीकेशंस यहाँ पे लॉन्च की गई। सबसे पहले सेंसस को देखते हैं। ये सेंसस आपका पेपरलेस होगा। पेपरलेस मतलब डिजिटल फॉर्मेट में होगा। सेंसस क्या होता है? एक तरीके का सर्वे होता है, जहाँ पे आपका ये सेंसस होगा मरीन फिशरीज के ऊपर, राइट, कि कहाँ किस एरियाज में हमें कौन सी फिश देखने को मिलती है, कितनी फिशिंग से कितने फिशरमैन की वहाँ पे एक कम्युनिटी है, वहाँ पे रोजगार कितना है, कितनी सेल होती है फिशेस की, कौन सी फिश की किस एरिया में सेल होती है, राइट, कौन सी एरियाज में किस फिशेस की हमें डिपेंडेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं लोगों पर, राइट। तो इन और किस एरिया में कैसी इकोनॉमी फ्लरिश हो रही है, राइट, जो कि फिशिंग से रिलेटेड है। तो इन सब के ऊपर एक सेंसस करा जाएगा, जिससे डाटा कलेक्ट किया जाएगा एंड उस डाटा की मदद से मीनिंगफुल आउटपुट निकाला जाएगा, उसका एनालिसिस करके। क्योंकि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे टूल हैं, आप उनको फेड कीजिए ना, उससे आपको मीनिंगफुल डाटा मिलकर निकल के आएगा, पैटर्न्स निकल के आएंगे, जिससे जो फर्दर डिसीजन मेकिंग होगी उस फिशरमैन कम्युनिटी की, उस मैरीटाइम इकोनॉमी की, वो यहाँ पे फ्लरिश होती हुई दिखेगी। तो ये तो हो गया सेंसस जो हमें देखने को मिला। फिर दूसरी चीज आ जाती है, 2 एप्लीकेशन ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, 3 एप्लीकेशन एक्चुअली ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी एप्लीकेशन है? व्यास NAV, व्यास भारत, व्यास सूत्रा। ये व्यास क्या है? व्यास है विलेज जेटी अप्रेजल नेविगेटर।
ये 3 एप्लीकेशन लॉन्च की गई हैं किसके द्वारा? ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा कोची केरला में, इसके द्वारा इन तीनों एप्लीकेशन को एस्टेब्लिश किया गया। व्यास NEV है जो फिशिंग विलेजेस एंड हार्बर्स है उनकी वैलिडेशन के लिए। व्यास भारत रहेगा जो हाउस होल्ड है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्यूमरेशन के लिए। व्यास सूत्रा रहेगा रियल टाइम सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग के लिए ऑफ द हाउस होल्ड्स एंड इन्यूमरेटर्स, राइट। तो मार्क करके चलेंगे। फिर यहीं पे जो ये MFC हाउस होल्ड न्यूमरेशन है, इसकी थीम याद रखेंगे। ये जो सेंसस हुआ स्मार्ट सेंसस स्मार्ट फिशरीज, ये थीम जरूर मार्क करके चलेंगे इसकी, इस सेंसस की। एंड 45 दिन के अंडर ये डाटा कवर किया जाएगा, डाटा कलेक्ट होगा। 3 नवंबर से लेके 18 दिसंबर तक ये डाटा कलेक्ट होगा, स्पेसिफिकली इन द इंडियाज कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जहां पे फिशिंग ज्यादा प्रेवलेंट है। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री होस्ट करेगी मिलान 2026 को, IFR को एंड आयोन्स कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। एंड इट इज द फर्स्ट टाइम कि इंडिया सभी तीनों फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स को, नेवल इनिशिएटिव्स को साइमल्टेनियसली होस्ट कर रहा है। मिलान एक्सरसाइज है, इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। सबसे पहले देख लो, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का होगा। देन आयोन्स कॉन्क्लेव जो है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स होगी 15 से 25 फरवरी तक, राइट। अगर हम बात करें इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की, तो इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा इंडियन नेवल शिप है जिसको शोकेस किया जाएगा यहाँ पर, वो है INS विक्रांत। INS विक्रांत को यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है स्टूडेंट्स। देन इसके बाद बात की जाएगी एक्सरसाइज मिलान की, जो कि बाइनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, जो कि किसके द्वारा कंडक्ट कराई जाती है? ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा कराई जाती है ऑफ द इंडियन नेवी, ठीक है, मार्क करेंगे। और ये आयोन्स कॉन्क्लेव यहाँ पे बेसिकली आपका ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इन सब के ऊपर बात की जाती है। तो ये तीनों फ्लैगशिप नेवल इवेंट्स साइमल्टेनियसली हमारा देश इंडिया होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंटरनेशनल अफेयर्स पे। इंडिया, हमारा देश फंड कर रहा है मल्टी एथनिक ट्राइलिंगुअल स्कूल, जो कि इनॉग्रेट किया जाएगा श्रीलंका में। फंड कर रहा है मतलब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके ऑपरेशंस के लिए इंडिया के द्वारा पैसा दिया जा रहा है 320 मिलियन श्रीलंकन रुपीस, राइट, श्रीलंकन रुपीस। इतना अमाउंट फंड किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। यहां पे 3 लैंग्वेजेस, क्योंकि ट्राइलिंगुअल है तो 3 लैंग्वेजेस हो गई जिसके ऊपर फोकस किया जाएगा, सिन्हाला, तमिल एंड इंग्लिश। इन 3 लैंग्वेजेस के ऊपर यहां पे काम किया जाएगा इस स्कूल में, जो कि श्रीलंका में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, फिर आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। हम बात कर रहे हैं एक काउंटर UAS ड्रोन सिस्टम की, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ड्रोन सिस्टम की इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। क्योंकि हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स आज के टाइम पे UAVs, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स, ये बहुत प्रेवलेंट हो गए हैं। एंड हमारे देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए जिससे हम एनिमी देश के जो ड्रोन्स हैं उनको काउंटर कर सके, उनको खत्म कर सके, उनको नष्ट कर सके, राइट। तो अभी एक्सीडेस टेक्नोलॉजीज, इन्होंने फ्रांस की सिलास SA के साथ अभी एक MOU साइन किया ताकि हम ये काउंटर ड्रोन सिस्टम डेवलप कर सके। एंड ये लेजर बेस्ड रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ये ड्रोन सिस्टम है CUAS, एंड यहाँ पे हवा में ड्रोन्स हैं, तो लेजर की मदद से ये इन ड्रोन्स को नलिफाई कर सकता है। हम ड्रोन से, लेजर से ही इनको खत्म कर सकता है, इनको यूजलेस बना सकता है। ये ड्रोन्स के लिए भी हो सकता है। सेम सिस्टम हम मिसाइल्स के लिए यूज कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं अगर हम इसको अपग्रेड कर दें, इसको टेक्नोलॉजी में चेंज कर दें, राइट। तो ये MOU मार्क करके चलेंगे। और आज की वीडियो में हम देखेंगे स्टूडेंट्स ड्रोन के ऊपर बहुत सारे MOUs हैं, ड्रोन्स मैन्युफैक्चर से रिलेटेड या फिर एंटी ड्रोन सिस्टम से लेके, राइट। स्टार्ट करते हैं। फिर आ जाते हैं सिटी यूनियन बैंक पर। $50 मिलियन की फंडिंग मिली है फ्रॉम IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही आर्म है। इनके साथ ये फंडिंग मिली है, मतलब इन्होंने ये फंडिंग प्रोवाइड करी है $50 मिलियन की। एंड ये फंडिंग किस लिए है? ताकि जो MSME हैं, राइट, ये जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, ये एनर्जी हमारी क्लीन हो सके, ये एनर्जी हम ग्रीन एनर्जी यूज कर सकें, ये एनर्जी सस्टेनेबल हो सके। एंड मोर फोकस रहेगा विंड एनर्जी के ऊपर एंड सोलर एनर्जी के ऊपर, ठीक है, मार्क करेंगे इसको। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड बिजनेस। हम बात कर रहे हैं मेल ड्रोन्स इन इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। मेल क्या होता है? मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। जैसे अभी हमने बात की थी कि हम ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बात करेंगे, तो ये जो मेल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है, मतलब रिमोटली मतलब इसको एक लोकेशन से रिमोटली आप पायलट कर सकते हैं, ईजिली इनको
उड़ाया जा सकता है, राइट। तो ये ड्रोन्स को मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बात की जा रही है। 87 मेल ड्रोन्स यहाँ पे बनाने की बात की जा रही है। एल&टी ने पार्टनर किया है GAASI के साथ। एल&टी जो कि है लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड, एंड GAASI है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स इनकॉर्पोरेशन। इनके साथ ये MOU साइन किया, ये पार्टनरशिप करी ताकि इन मेल ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करा जा सके। फिर आ जाते हैं जेन टेक्नोलॉजीज के ऊपर। इन्होंने सिक्योर किया एंटी ड्रोन सिस्टम का ऑर्डर वर्थ 289 करोड़ रुपीस। किससे? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, राइट। ताकि इन ड्रोन्स को, एंटी ड्रोन सिस्टम्स को अपग्रेड किया जा सके एंड इन मॉडर्नाइज किया जा सके। देखो ये एग्जीक्यूशन 1 साल के अंदर हो जाएगा। और क्यों करा जा रहा है ये सब? इन एंटी ड्रोन सिस्टम्स को बनाया भी जाएगा। रीजन क्या है कि जैसे मैंने बताया कि अब जो वॉरफेयर होगी ना उसमें ड्रोन्स का यूज ज्यादा होता हुआ हमें दिखेगा, राइट। क्योंकि इसमें ह्यूमंस का लॉस नहीं होता, टेक्नोलॉजी लॉस होता है, बहुत ईजिली बन जाते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, राइट, एंड इफेक्टिव ज्यादा होते हैं ये, राइट। तो इनको बनाने के लिए, एंड अगर कोई एनिमी इनको यूज कर रहा है तो कैसे हम उनको काउंटर कर सकते हैं, कैसे उनको नलिफाई कर सकते हैं, उसके ऊपर यहां पे काम किया जाएगा, उनको अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे स्टूडेंट्स। अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल्स अचीव किए गए अंडर वीमेंस हेल्थ कैंपेन SNSPA। SNSPA क्या है? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंडर। देखो 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले देख लेते हैं। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड है मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन का, 3 करोड़ 21 लाख के करीब यहां पे रजिस्ट्रेशन होते हुए देखिए सिंगल मंथ में, जो कि हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन है किसी हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म पर एक महीने में। दूसरा है मैक्सिमम स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर, 9,94,349 लोगों ने साइन अप किया ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए इन अ सिंगल वीक। एंड थर्ड आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है मैक्सिमम स्क्रीनिंग फॉर वाइटल साइंस, जो कि है 1,25,406 पीपल्स ने साइन अप किया फॉर वाइटल साइंस स्क्रीनिंग ऑनलाइन इन अ सिंगल वीक एट अ स्टेट लेवल। तो ये 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यहां पे अचीव होते हुए हमें दिखे। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे लखनऊ, जो कि यूपी में है। इनको डेजिग्नेट किया यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी अंडर UCCN। UCCN क्या है स्टूडेंट्स? UCCN है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, एंड इंडिया की ये 2nd सिटी बन गई है जहां पे इनको ये सम्मानित किया गया। पहली सिटी कौन सी थी? हैदराबाद तेलंगाना, राइट। एंड ये 2nd इंडियन सिटी बन गई है जिसको इस रिकॉग्निशन से सम्मानित किया गया, राइट। ये कहां पे इनको ये अनाउंसमेंट की गई? 43rd सेशन ऑफ यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस, जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था, वहां पे इनको डेजिग्नेट किया गया एज द क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एंड अब इससे ये प्लेस कर, लखनऊ प्लेस होती है अमंग द 70 ग्लोबल गैस्ट्रोनॉमी हब्स ग्लोबली, राइट। अगर मैं UCCN की बात करूं तो UCCN 2004 में स्टैब्लिश किया गया था ताकि जो सिटीज का कॉपरेशन है उसको प्रमोट किया जा सके एंड क्रिएटिविटी को सामने लाया जा सके यूजिंग सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है दबंग दिल्ली KC। ये कबड्डी फुटबॉल क्लब है, राइट। इनके द्वारा प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 को जीत लिया गया है पुनेरी पल्टन को फाइनल में हरा के। जो इसका फाइनल था वो कहां पर हुआ था? त्यागराज स्टेडियम में हुआ था, जो कि न्यू दिल्ली में है। एंड ये इनका 2nd टाइम रहेगा कि इन्होंने इस टाइटल को जीता है। पहली बार इन्होंने सीजन 8 को जीता था, अब इन्होंने सीजन 12 को जीत लिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो। फिर आ जाते हैं इसके बाद इंडियन टेनिस प्लेयर रोहन मचंदा बोपन्ना, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ करियर इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया प्रोफेशनल टेनिस से। अगर हम इनकी बात करें, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किस साल में? ये क्वेश्चन आएगा 2024 में। अर्जुन अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? 2019 में। एकलव्य अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? 2005 में, राइट। फिर इसी के अलावा इन्होंने 3 ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया, 2012 के, 2016 के, 2024 के, राइट। एंड एशियन गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं ये 2018 के इवेंट्स के दौरान, राइट। 2017 में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता, देन 2024 में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता। करेक्ट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। इंस्टाग्राम पे अफेयर्स क्लाउड से आप सर्च कीजिए एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, हमारा चैनल है। इवन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, विकास राणा, विकास_R राणा के नाम से आप मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सो डू फॉलो अस, हम डेली बेसिस पे वहां पे भी अपडेट देते रहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे स्टूडेंट्स। वर्ल्ड वीगन डे हम ऑब्जर्व करते हैं 1 नवंबर को। अब ये वीगन क्या होता है? वीगन बेसिकली वो डाइट होती है जहां पर आप कोई भी एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं करते हैं। उसमें हम मीट, चिकन वगैरह तो आता ही है, वो इंक्लूड नहीं होता। इवन मिल्क, राइट, चीज, आपका पनीर, ये सारी चीजें भी इंक्लूड नहीं होती हैं। एग्स भी नहीं होते हैं, राइट। वीगन डाइट होती है जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्लांट रिलेटेड
जो भी फूड है आप वो कंज्यूम करेंगे। इसको काफ़ी हेल्दी माना जाता है, राइट, काफ़ी प्रचलन में है ये, इसको काफ़ी हेल्दी डाइट के तौर पे आगे लाया जाता है एंड काफ़ी लोग इस डाइट को फॉलो भी करते हैं। ये 1 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। 1994 में पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था। इवन इसके लिए एक मंथ डेडिकेटेड है जो कि है नवंबर मंथ, 1 से लेकर 30 नवंबर तक हम वर्ल्ड वीगन मंथ ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, हम ऑब्जर्व करते हैं 2 नवंबर को, राइट। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो ग्लोबल एक अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके ग्लोबली अबाउट द थ्रेट फॉर इम्प्यूनिटी फॉर अटैक्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। इसकी एक थीम याद रखेंगे, चैट GBV रेजिंग अवेयरनेस ऑफ AI फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन जर्नलिस्ट, एंड पहली बार 2 नवंबर 2014 में इसको ऑब्जर्व करा गया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे जो आपकी लर्निंग में काफी बेनिफिशियल रहेगा। एक और चीज स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी बच्चों को बोलूंगा जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। हम 500K सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले हैं, सो हेल्प अस अचीव दिस टारगेट एज सुन एज पॉसिबल। सभी से अनुरोध है, जो बच्चे ये वीडियो डेली बेसिस पे देखते हैं, राइट, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है डेली बेसिस पे, तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब कीजिए। एक और चीज स्टूडेंट्स, आप हमारी वीडियोस रेगुलरली देखा करो, चाहे आपका एग्जाम हो या ना हो, आप अगर हमारी वीडियोस डेली बेसिस पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी न्यूज सुनने को मिलेंगी, बहुत सारा डाटा देखने को मिलेगा डेली बेसिस पे, जो आपकी जनरल अवेयरनेस क्रिएट करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। एंड आप एग्जाम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, राइट, तो न्यूज़पेपर में बहुत सारी अनवांटेड न्यूज़ भी होती हैं, लेकिन हम टू द पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं जिससे आप डेली बेसिस पे अपडेट रह सकें, चाहे वो नेशनल अफेयर हो, इंटरनेशनल अफेयर हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे कोई नई गाइडलाइंस आ रही है, चाहे सेबी की, चाहे RBI की, चाहे बैंकिंग से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ रही है, राइट, चाहे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ रही है, राइट, तो उन सब से रिलेटेड हम आपको डाटा प्रोवाइड कराते हैं। स्पोर्ट्स से आप अपडेट रहेंगे कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, किसने कौन सा इवेंट जीता, किसने कौन सी सीरीज जीती, जैसे अभी हम इंडिया का T20 सीरीज देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो उसमें कौन जीतेगा, राइट, उन सब से रिलेटेड हम आपको डाटा प्रोवाइड कराते हैं जो आपकी लर्निंग में, आपकी डे टू डे नॉलेज में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो जरूर फॉलो करा करो आप हमारी वीडियोस को। चलिए अब चलते हैं रिवीजन पार्ट पर। अभी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन्होंने नोटिफाई किया नेशनल पॉलिसी ऑन व्हाट, ये जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर पॉलिसी थी, जहां पे हमारा टारगेट रहेगा कि जो इंडिया का टारगेट है 2070, राइट, जहां पर हम नेट जीरो टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, मतलब हम कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं, जितना हम कार्बन रिलीज करें हम उतना ही कार्बन एब्जॉर्ब कर सकें, इसको अचीव कर सकें। तो ये जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर ये थी। एंड जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, अर्थ की जो हीट है हम उसकी मदद से जो वाटर है उसको इवेपोरेट होता है, एंड वाटर इवेपोरेट होने से जो स्टीम है, जो भाप बनती है, उससे टरबाइंस को रन किया जाता है, उस टरबाइन के घूमने से फिर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो मार्क करेंगे इसको। तो ये जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर था। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स ऑफ यूपी डिड यूनियन मिनिस्टर किंजराप्पू राम मोहन नायडू, इन्होंने लॉन्च किया इनिशिएटिव यात्री सेवा दिवस अभी सितंबर के महीने में, जिसका फोकस था पैसेंजर सेंट्रिक सर्विसेज को लेके, राइट। तो कहां से इसको लॉन्च किया गया था, उस एयरपोर्ट का नाम क्या है, वो है हिंदुन एयरपोर्ट, राइट, मार्क करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं फिर मेंशन द स्टेट, जो कि पहली स्टेट बन गई इंडिया में जिन्होंने इशू किया ID कार्ड्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेन। सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेंस के लिए जो ID कार्ड्स इशू करने वाली पहली स्टेट बन गई है तमिलनाडु। इससे होगा क्या, अब ये रजिस्टर्ड हो गई हैं वीमेन, राइट। अब हर इंडिविजुअल या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के यहाँ पे वीमेंस के पास वो ID कार्ड है, जिससे जो भी सर्विसेज सरकार के द्वारा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके द्वारा जो लॉन्च की जाएगी उसका फायदा अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वीमेंस उठा सकेंगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फाइंड आउट द डेट ऑन विच 9th एडिशन ऑफ स्वच्छता ही सेवा कैंपेन विल कल्मिनेट अक्रॉस इंडिया। तो स्वच्छता ही सेवा कैंपेन कब शुरू होगा, कल्मिनेट कब होगा, तो ये 1 अक्टूबर, आई रिपीट, ये आपका होगा 2 अक्टूबर 2025 को। 2 अक्टूबर क्यों, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी होता है, राइट। इसी दिन हम गांधी जयंती ऑब्जर्व करते हैं, तो इसलिए ये 2 अक्टूबर को होगा। एक और चीज़, ये जो कैंपेन है ये मोबिलाइज करेगा मिलियंस ऑफ सिटीजन्स को इन मास ड्राइव्स, ताकि पब्लिक क्लीनिनेस अवेयरनेस कैंपेन हम लॉन्च कर सकें अक्रॉस इंडिया। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। यहीं पे एक थीम और याद रखेंगे, स्वच्छोत्सव थीम रहेगी, स्वच्छोत्सव, ये यहाँ पे थीम रहेगी, राइट, ये मार्क जरूर करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स फिर इसके बाद।
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इंडियन डिफेंस कंपनी जिन्होंने 66 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया सितंबर के महीने में विद इंडियन नेवी फॉर द सप्लाई ऑफ इंडिजीनियसली बिल्ट अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स के लिए, राइट। ये अभी इंडियन डिफेंस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, क्रोशिया टेक्नोलॉजीज के द्वारा ये साइन किया गया है। क्रोशिया टेक्नोलॉजीज बात करें तो ये एक डीप टेक कंपनी है, कहाँ से, ओडिशा से। ये एक स्टार्टअप है, कहाँ से, ओडिशा से, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, नेम द डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने टॉप किया अभी नेशनल इनोवेशन रैंकिंग के अंडर, नेशनल इनोवेशन रैंकिंग में अंडर इंस्पायर अवार्ड्स अंडर मानक। मानक क्या है, मिलियंस माइंड ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन नॉलेज 2025 सबमिटिंग 7403 इनोवेशन स्टूडेंट आइडियाज, राइट। तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ जिन्होंने यहाँ पे टॉप किया, वो है मुजफ्फरपुर ऑफ बिहार। नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर डिड इंडिया, कहाँ पे इंडिया ने होस्ट किया सेकंड एडिशन ऑफ बिम्स्टेक यंग लीडर्स समिट 2025 9 से लेके 11 सितंबर तक। तो कहाँ पर इंडिया ने होस्ट किया इसको, लोकेशन का नाम बताओ। तो ये होस्ट किया गया गुवाहाटी, असम में। नेक्स्ट पे आते हैं फिर उस मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी ने का नाम बताओ जिन्होंने पार्टनर किया भारत जैन के साथ इन सितंबर, जो एडवांस करेगा इंडिक लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को इंडिया में। सो मेंशन दैट मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, क्या नाम रहेगा उस कंपनी का, वो है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। IBM ने यहाँ पे अभी पार्टनर किया भारत जैन के साथ। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, उस कंपनी आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को जिन्होंने पार्टनर किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ इन सितंबर, जो मॉडर्नाइज करेगा मुंबई का आइकॉनिक ससॉन डॉक को इन मॉडर्न एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल हार्बर। तो ये रहेगा फिनलैंड कंट्री। नेक्स्ट पे आते हैं फिर इन सितंबर इंडियन रेलवेज ने ऑफिशियली रीनेम किया अहमदनगर रेलवे स्टेशन को ऑफ पुणे डिवीजन इन महाराष्ट्र टू व्हाट, तो इनको अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन नेम किया गया एंड इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर 18th सेंचुरी मराठा क्वीन। इनके जो एफर्ट्स थे, जो पब्लिक वेलफेयर एंड गवर्नेंस थी, उनको ध्यान में रखते हुए इनके नाम के साथ इनको ऑनर किया गया, इस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, टोल फ्री नंबर क्या है टू रजिस्टर द GST रिलेटेड कंज्यूमर कंप्लेंट्स ऑन द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, जो कि लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा। तो यहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया वो है 1915। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, अभी सितंबर के महीने में किस स्टेट गवर्नमेंट ने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू स्टार्ट वाटर मेट्रो सर्विसेज इन द स्टेट्स कैपिटल सिटी। तो स्टेट कैपिटल सिटी में यहाँ पे मेट्रो सर्विसेज लॉन्च करने की बात की जा रही है। इवन हम देख रहे थे कुछ टाइम पहले यहाँ पे इंडिया में क्रूज, लग्जरी क्रूज टूरिज्म के ऊपर भी बात की जा रही है, जिससे काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती हुई दिखेगी। इससे लॉजिस्टिक भी बेटर होगी मेट्रो सर्विसेज से, एंड क्रूज टूरिज्म से हम देखेंगे टूरिज्म को बहुत ज्यादा पुश मिलता हुआ दिखेगा। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने साइन किया ये MOU इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, ये पूछा जा रहा है। तो ये बिहार के द्वारा किया गया है, एंड बिहार में अभी हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स इलेक्शंस भी होने वाले हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने प्रिजाइड किया ओवर 51st फाउंडेशन डे ऑफ द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि परिवेश भवन में हमें देखने को मिला न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पे आते हैं फिर इसके बाद सितंबर के महीने में यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खातिक जी, इन्होंने लॉन्च किए 2 इनिशिएटिव। एक तो है आपका वृद्धा मित्रा टूल किट एंड दूसरा रहेगा सेकेंड एडिशन ऑफ श्रृंखला टॉक सीरीज। इन दोनों का एम क्या रहेगा कि एल्डरली केयर के ऊपर हमें बात करनी है कि कैसे हम बड़े लोगों की केयर कर सकते हैं, उनकी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए फॉर एल्डरली केयर, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये 2 चीज़ें यहाँ पे 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, टोटल कैपिटल कॉस्ट अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन सितंबर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन साहिबगंज अरेजा बेटिया स्टेट सेक्शन ऑफ NH 139 वाटरवे इन बिहार अंडर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। तो टोटल कैपिटल कितना रिक्वायर्ड रहेगा, 3822 करोड़ रुपीज रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं फिर सितंबर के महीने में यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी ने इनॉग्रेट किया पहला रीजनल ऑफिस ऑफ द APEDA। कहां पर, तो ये पटना बिहार में इनॉग्रेट किया गया टू स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, राइट। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए मार्क करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अभी कहां पर इंडिया का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक एंड कैशलेस वी ऑफिस को यहाँ पे लॉन्च किया गया, राइट, इनॉग्रेट किया गया बाय दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, जिससे डेंटल हेल्थ केयर एंड एजुकेशन को फ्लरिश करने की बात की जाएगी। तो मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया। फिर आ जाते हैं सितंबर के महीने में किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को, जो कि एक वेलफेयर स्कीम है जो प्रोवाइड करा रही है 2100 रुपये पर मंथ टू द एलिजिबल वीमेन टू स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टैंडिंग इन द स्टेट। तो किन स्टेट की वीमेंस को ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं 2100 रुपये पर मंथ, तो ये रहेगा हरियाणा। नेक्स्ट पे आते हैं फिर, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया टू डिसकंटिन्यू द फिजिकल
डिसएम्बार्केशन फॉर्म, जो कि पेपर अराइवल कार्ड्स होते हैं फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए। तो जब वो अराइवल होते थे तो पहले फिजिकल फॉर्मेट में कार्ड मिलते थे, अब ये डिजिटल फॉर्मेट में कार्ड मिलेंगे, जिससे ये अराइवल से पहले इन कार्ड्स को भर सकेंगे एंड जो एंट्री प्रोसेस है वो ईज होती हुई दिखेगी, स्मूथ होती हुई दिखेगी। पूछा जा रहा है ये लागू कब से हो जाएंगे, फ्रॉम विच डेट, तो 1 अक्टूबर 2025 से ये लागू होते हुए दिखेंगे। Next is our homework, students. First is, tell me Coal India Limited, they partnered with which IIT, right, for sustainable energy, for clean energy research and innovation in India. Second question, which state has recently joined PM Shri scheme? Also explain what is this PM Shri scheme. Third question, tell me recently, name India, our country, we have unveiled the first indigenous antibiotic. Name that antibiotic. Fourth question, what is the rank of India globally in terms of forest area? This report was released by which organization? Tell me that also. And fifth question, recently, tell me, if I ask you, when do we observe Vigilance Awareness Week? And the theme for this Vigilance Awareness Week, and why do we observe Vigilance Awareness Week? So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.